but a chance to begin, to learn beyond books, to grow from within, to stumble, to rise, to discover our way, to become a little better with each passing day. With dreams in our hearts and hope in our sight, we step into mornings shining with light. For every new session quietly brings the courage to soar on our own wings. A very warm and cheerful morning to our respected principal, esteemed enrichment head, junior wing head, coordinators, teachers, and my dear students. With the beginning of this new academic session 2026-27, we open the doors to fresh opportunities, new learning experiences, and a journey filled with growth and success. Let us embrace this new beginning with enthusiasm, determination, and a positive spirit. Today, Class 8A students will present their welcome assembly on the theme World Health Day. To invoke the blessings of the Almighty and seek guidance for the year ahead, I invite our school choir to present the morning prayer. And soulful prayer. May these divine blessings guide us throughout the year. Let us now enrich our minds with the thought of the day. From Class 8A to share the thought of the day with all of us. Good morning, everyone. The thought for today's day is success isn't about being the best in the room. It's about being better than you were yesterday.
I repeat, success isn't about being the best in the room. It's about being better than you were yesterday. My dear friends, if you just get 1% better every day, you aren't just a little better. You are a completely different and much stronger version of yourself. All the best for a brilliant beginning. Thank you. Thank you for that inspiring thought. Indeed, it reminds us to stay focused and determined in all our endeavors. The future you will create. Wishing you all a wonderful and successful academic year ahead. Thank you. Warm and heartfelt words. Poetry has the power to touch hearts and inspire souls. I now invite Manju ma'am to present her self-composed Hindi poem on the theme World Health Day. सबको शुभकामनाएं। मेरी कुछ पंक्तियां स्वास्थ्य के नाम। शब्दों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज की हमारी एक्टिविटी इसके ऊपर कंसेप्ट मैप हमने बनाना है और मैंने चेक करना है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है, यह बात हम जाने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है, यह सत्य को पहचाने। स्वास्थ्य ही जीवन है, इसके महत्व को समझें और समझाएं। बीमारियों से दूर रहकर स्वच्छता की राह अपनाएं। पौष्टिक भोजन को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर ताजगी और संतुष्टि से अपने जीवन को सजाएं। प्रकृति प्रकृति की गोद रामबाण है, यह रहस्य अपनाएं। इसके सानिध्य में रहकर मन की बेचैनी दूर भगाएं। प्रकृति में ही जीवन का सार है, यह सत्य अपनाएं। इसके स्नेहित आंचल में ही अपना जीवन बिताएं। योग योग भगाए रोग, योग योग भगाए रोग। इस ज्ञान को समझें और समझाएं। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर जीवन सफल बनाएं। जीवन जीना एक कला है और जिसका मूल है अनुशासन। अनुशासन को हर पहलू में अपनाकर जीवन का उत्कृष्ट बढ़ाएं। आदर्श मूल्यों को जीवन से सुंदर बनाएं। सदाचार और संयम से अपने पथ को सजाएं। आओ इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सब मिलकर इस संकल्प को दोहराएं। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझेंगे। अच्छे स्वास्थ्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर अनुशासित और आदर्श जीवन शैली अपनाएंगे और स्वयं को स्वस्थ रखेंगे।